Okay, hi guys, how's everyone? Welcome to today's class. And today is the third class of area, and we are just going to continue with last time we did parallelogram and rhombus, and today we'll be continuing with that, and then we'll go ahead, okay, and do some more shapes. So, okay, मेरा screen दिख रहा है? Yes, sir. Okay, okay, ठीक है. Okay, so let's just go through once what we did last time, so you have an idea. Okay. So firstly, we learned ये सब formula ये याद रखना, okay? Let's remember that area of a parallelogram is equal to base multiplied by the height. Okay, so that is the first formula. Then उसके बाद we did few questions on that simple basic formula. Area is equal to base into height for a parallelogram. And then next we did this rhombus shape. The rhombus looks like a square, and I told her it's a slanted square. If I say ये बोला था ना पूरा slanted, ऐसे square, all sides equal. So remember this also that a property is that all sides of a rhombus are equal in length. This property is very important. So today we'll be using this property also in questions. So this is just a diagram. And area of the rhombus is equal to half multiplied by d1 into d2. मतलब half into product of diagonals. Okay, so the question may if both the diagonals ka length is given, then you can do half into d1 into d2 and get the answer. So let me just bring the homework questions here once and we just discuss that and then go ahead. Okay, so firstly, yeah, first there were questions on parallelogram. So let's just do that. Hmm. Yeah, here it is. Okay. ठीक है, तो ये सब तीनों क्वेश्चंस हो गए थे क्या? बोलो एवरीवन से आर्यन. Yes, sir. Okay, so first question, if base of a parallelogram is 18, height is 11, find area. So area will be base into height, simple. Then second question, Yes. area is, okay, yeah. Second question, area is given, base is given, find the height. So bas height is equal to area upon base. ये भी बहुत simple है. Second also done. And third में again area is given, height is given, find the length of base. So again using this formula, base will be area upon height. Okay. And units of area will be centimeter square or square centimeter, and unit and height will be like just centimeter. So remember to use the correct unit. Okay, so these questions I won't solve now. These are like basic and essay type के questions class में भी किए हैं, तो ठीक है. Okay, now we'll bring on the next part of the homework, which was of a rhombus. Give me a minute, I'm just getting those things on the screen. Hmm. Okay, yeah, here it is. So here are the questions on rhombus, and let's see. So first question, okay. Length of the diagonals of a rhombus are 15 centimeter and 24 centimeter. So that way, simple question, that means area is equal to half multiplied by d1 into d2. So half into 24 into 15, and then 2 12s are 24. So answer will be 12 into 15, which is nothing but 180 centimeters. So area will be 180 centimeter square. Okay, this. So ये भी हो गया पहला वाला, easy था. Then second question, length of the diagonals of a rhombus are 16.5 and 14.2. तो again use the same formula. तो ये भी solve कर लो. इसका calculation थोड़ा क्योंकि decimals है, it's a little tougher, but you all should be able to do it. Okay, so second question also done. Now we'll come to the third question, okay, which is a pretty good question, I would say. Yes, And sir. ये type का ऐसे थोड़ा सोचना पड़ेगा, okay. So let's see. If perimeter of a rhombus is 100 centimeter and length of one diagonal is 48 centimeter, what is the area of the quadrilateral? So see this question, write this question down, okay, in your book, and let me just bring this figure here. Okay. Okay, so let's read it again.
perimeter of a rhombus is 100 centimeter. Okay, if this is a rhombus, okay, the sum of all sides, perimeter क्या होता है? What is the perimeter? Sum of all sides, ना? So since Yes. okay, perimeter is equal to sum of Sum of all all, sides. yeah, sum of all sides. And in a rhombus, what property to tell you? That all sides are equal, like a square, all sides are equal. This is a very important property. So if this side का length is s, इसका will also be s, इसका will also be s, मतलब चारों का s हो जाएगा. So perimeter of a rhombus, perimeter का formula becomes 4 into s. Or you can say that s plus s plus s plus s. So this is nothing but 4s, correct? इतना समझे? Yes, sir. Okay, ठीक है. So okay, good now. Okay, now let's see. So perimeter is given to us, which is 100 centimeter. So okay, wait. Let me just draw something more here first. Let me draw the diagonals of this. This is the first diagonal. Okay, this is the second diagonal of a rhombus. So now, okay, now let's just go back to the question once. Since the perimeter is given question में दिया है, it's 100 centimeter. So that means 100 is equal to 4 into s. So therefore, s is equal to 100 upon 4, which is how much? 25 centimeter. So that means one side ka length of this rhombus, we already found. We found it to be how much? 25 centimeter, correct? So let's write that down. Yes. Okay, so this length is 25 centimeter. ये पूरे side का length. And what is else is also given? Length of one diagonal is 48 centimeter. तो suppose ये पूरे diagonal का length, suppose this is A, this is B. So ये पूरे AB का length is 48. So half of AB का will become how much? 48 upon 2, which is how much? 24. So that means this is 24 and this is 24 centimeter, correct? Yes. And let's name this central point O. Okay, इसको O name करेंगे. And okay, wait. ठीक है. So now, if you look at this, look ध्यान से देखोगे. So you see, wait. If you look carefully, very carefully, or this thing O till here, till this, till here, this is forming a triangle, and this is 90 degrees. तो ये एक ऐसा right angle triangle नहीं बन जाएगा. See, if it look like this, Yes. this, okay, and this is O point, this is the 90 degrees. देखो ये side का length AB is 25, तो this is 25, and this height of it का length, if we are turning this triangle like this, so this will be 24, and this we'll assume it to be some x. Okay, let's assume it to be x, ये पूरे base का length. तो now this right angle triangle में, if you have to find a third side, तुम लोग को कुछ याद आ रहा है? What you have learned before? Tell me. Let me write it. ये पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है? Yes. Okay, so that means in this question you need to use Pythagoras theorem to find x, and this x over here, if I draw it on this, x is this, ये O से यहाँ M point, ठीक है? Like this thing is basically x. So this is x, what we need to find. So in this triangle, पहले तो according to Pythagoras theorem, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the opposite of the other remaining two sides. So in this figure, this is B and this is M. So this is B, this is M. So in triangle OBM, according to, by using Pythagoras theorem, BM is the hypotenuse. So BM square is equal to OB ka square plus OM ka square. Correct? Sum of the square of the hypotenuse is equal to the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the remaining two sides. Okay, so that if we use that, so BM ka square, BM is the hypotenuse, this longest side ko hypotenuse bolte hai, which is opposite to the right angle. So ठीक है. So that means, let's see, 25 ka square is equal to 24 ka square plus OM ka square.
So now we have to simplify this basically. So if you find the squares of both these, 25 into 25, इसका भी ढूंढो, and 24 into 24, find this whole calculation. Okay, I know this, that's why I'm telling you. Okay, हाँ, तो ये मेरे को पता है बेसिकली, ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस. तो 25 को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या बोलते हैं, इट बिकम, ये तुम लोग को खुद ढूंढना है, 25 टू 25, ठीक है, ये पूरा सॉल्व कर लो, एंड 24 टू 24, सो दिस बिकम्स 625 इज इक्वल टू 576 विच इज 24 का स्क्वायर प्लस OM का क्या था लेंथ, x, देखो x, तो x का स्क्वायर, ठीक है. यहाँ तक समझा है सबको? यहाँ तक कुछ भी है पूछने को तो पूछ लो, ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ भी अगर. Sir, OB square plus OM square, from where do you take this? ओके, सी, पहले तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, डू यू नो कि वो क्या है बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम? उस पे पहले क्वेश्चंस किए हैं कभी? Yes. हाँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट, हाइपोटेनस जो होता है ट्रायंगल का, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द बाकी दोनों जो बचे हुए साइड्स है उनका स्क्वायर का एडिशन करेंगे. तो सो ये BM OB नेमिंग छोड़ो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इतना देखो दैट 25 का स्क्वायर विच इज द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द बाकी टू साइड्स का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर. बस इतना भी समझे तो चलेगा, यू डोंट नीड टू नेमिंग, वो सब मैंने बस ऐसे ही डाल दिया टू गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. बट उसके बिना भी अगर ऐसे लिखोगे कि 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, उससे भी हो जाएगा. तो अभी समझे? Yes. Yes. हाँ, वेरी गुड. सो ओके, अभी इसको सॉल्व करेंगे. तो 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, एंड OM का लेंथ जो है, OM ये है, देखो O ये M, तो OM उसको बोलते हैं, उसका लेंथ x, ठीक है. सो नाउ लेट्स डू दिस. सो नाउ वी नीड टू फाइंड x. तो 625 माइनस 576, देखो यहाँ पे 576 इज प्लस में, सो ऑन द अदर साइड इफ यू टेक इट वो Yes. सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इज इक्वल टू x का स्क्वायर. Yes. सो नाउ 625 माइनस 576, अगेन तुम लोग को ये खुद करना है, बट अभी मैं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा. सो 49 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, सो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 49, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49. तो क्या है इसका आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है, किसी को पता है? 49 square. 49 का स्क्वायर रूट, हाँ, क्या होता है? 9. विच नंबर का स्क्वायर इज 49? देखो 7 हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 49 ना. Yes. तो x, हाँ, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 हो गया. ऐसे देखो, इफ समवन आस्क्स यू, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7, तो तुम बोलोगे कि स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, हाउ 7 into 7. एंड इफ समवन आस्क्स यू Yes. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो तुम बोलोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 is 7. हाउ? क्योंकि 7 into 7 is 49, तो 7. ओके, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, Yes. कभी कभी ऐसे होता है, बट ओके, जस्ट समझ लो. Sir, then x value is 7, no? यस, करेक्ट, वेरी गुड. सो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. एंड अभी हुआ नहीं है क्वेश्चन, वी जस्ट फाउंड द रिमेनिंग डाइग. अभी देखो पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. सो x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, अभी हम लोग ने इतना मेहनत करके ढूंढा है. तो नाउ लेट्स सी व्हाट यूज वी हैव ऑफ दिस. सो नाउ दिस x का लेंथ इज 7, तो ये पूरे डायगोनल का लेंथ क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 ना, क्योंकि 7 प्लस वो ऊपर का भी 7, या 7 प्लस 7, जो भी तुम बोलो. ओके, so the whole diagonal का length comes out to be how much, 14 Sir, 2 centimeters ना? कहाँ से लिया आपने? अरे ये 2 छोड़ो, 2 छोड़ो, ओके, ये 2 भूल जाओ, वो गलती से लिखा. जस्ट अंडरस्टैंड कि ये आधे डायगोनल का लेंथ 7 है, तो पूरे का विल बी 7 प्लस 7 ना. Yes. ओके, सो दैट इज हाउ इट कम्स आउट टू बी 14 सेंटीमीटर. ये 2 नहीं लिखना. सो देखो, दिस मच का लेंथ इज 7, सो पूरे का विल बी 7 प्लस 7 व्हिच इज 14 सेंटीमीटर. So let's see now. So that means diagonal
1 का लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 का लेंथ देखते हैं. डायगोनल 2 इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन में दिया है डायगोनल 2 का लेंथ. लेट्स रीड द क्वेश्चन. एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48. तो एक का 14 है, 48. दूसरे का 40. वेरी गुड. सो 48. And now we can use the formula for area of rhombus is equal to, एक मिनट area ही पूछा ना. हाँ, so area of rhombus is equal to half into d1 into d2. So this is half into 14 into 48. Okay, अभी समझे? अभी तो Yes. कर लोगे ना, easy है. 2 ones are 2. Yes. 2 multiplied by 7 is 14. So 7 multiplied by 48 will be the answer. So let's see, 48 into 7. 7 8s are 56. 7 4s are 28 plus 5. So 33. So ये 336. तो answer will be 336 centimeter square. Okay. ये पूरा Yes, sir. लिख लो अच्छे से. ऊपर का पार्ट कॉपी किया कि I'll Yes. show you that also. Sir, this part is only given. Okay, okay, चलो. ये पूरा अच्छे से लिख लो एंड कुछ भी है anyone has to ask, please ask. Okay. Yes, sir, done. Okay, चलो, very good. So ये हो गया अभी. Now wait, I'll just show this. कोई बाद में recording दिख रहा है. Anyone wants to can pause the video here and just see this if you want. Okay, ये Pythagoras theorem है and perimeter. ये important था कि in a rhombus all sides are equal. So अगर एक side का length s है तो बाकियों का भी length s ही होगा. Okay, so okay, done. Now Yes. I'll bring in another question. एक minute. Okay, तो हाँ, ये question. Okay, पहले के तीन तो हो गए, तो now we just look at the fourth one. So let's see the fourth question. Everyone, सब लोग fourth question पढ़ो. If length of a diagonal of Yes. a rhombus is 30 centimeter, length of a diagonal of a rhombus is 30 centimeter, and its area is 240 square centimeters, find its perimeter. So okay, let's see. Diagonal 1 of a rhombus is given to be 30 centimeters. Area is 240 centimeter square. पहले तो we need to find the perimeter. So perimeter is what? Perimeter का formula ऊपर था 4 multiplied by side of the 4 into s. So Sir, firstly अभी can we write perimeter formula like the side square? नहीं, perimeter is not equal to side का square. वो सिर्फ स्क्वायर के लिए होता है एंड वो स्क्वायर का होता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into s. बट पेरीमीटर ऑफ अ rhombus is 4s एंड एरिया, देखो एरिया ऑफ अ rhombus का फॉर्मूला अब इतने टाइम से कर रहे हैं. एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू d1 इनटू d2. क्योंकि Yes. एरिया ऑफ अ rhombus कैन नॉट बी सेड एज साइड का स्क्वायर. द रीजन इज, वो भी बता ही देता हूँ. मिनट ये डायग्राम लाता हूँ. ओके, देखो द रीजन इज दैट इन अ rhombus ना ऐसे स्क्वायर, देखो कैसे होता है, स्क्वायर स्ट्रेट बट rhombus ऐसे टिल्टेड होता है. तो बिकॉज ऑफ दैट टिल्ट ना ऐसे कुछ चीजें बदल जाती है. दैट्स व्हाई इफ वी यूज दैट फॉर्मूला गलत हो जाएगा. सो ऐसे एक मिस्टेक है कॉमन, बट डोंट डू दैट. Yes, ओके, sir. चलो. ओके, एक मिनट, लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस. या तो ये पहले तो ये डायग्राम कभी भी क्वेश्चन करो तो एक बार ड्रॉ कर ही लो. विल बी बेटर ओनली. ऐसे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाता है. ठीक है, तो ये अभी मैं हर बार ड्रॉ नहीं करूँ क्योंकि यहाँ पे टफ है, बट तुम लोग को ये ड्रॉ करना चाहिए पूरा डायग्राम. सो दिस इज द डायगोनल 1, Yes. दिस इज द डायगोनल 2.
Okay, let's see. So पहले तो okay, using this formula, half into d1 into d2. Let's find the other diagonal. Yeah, d1 area. So okay, so area is 240 is equal to half multiplied by diagonal one is 30 into d2. So now two ones are two, two 15s are this. So d2 is equal to 240 upon 15. Abhi now we need to divide this. So 15 and 240 पहले तो they go in 3 का table, 5 का table. So let's just do 3 का table. 3 into 5 is 15 and 3 into 80 is 240 because 3 8s are 24, so 3 80s are 240 and 5 ones are 5 and 5 16s are 80. So diagonal 2 का length comes out to be 16 centimeter. Okay, so from that we can say that diagonal 1 is 30, तो ये 15 और ये 15 क्योंकि 15 plus 15 is 30 and diagonal 2 is 16, Yes. so that means this is 8 and this is 8 और पूरा 16 हो गया. Okay, and we need to find the perimeter, that is 4 into side. और side क्या होता है, ये होता है. Now we need to find this side का length. तो अभी कैसे ढूंढेंगे, इसमें भी पाइथागोरस ही लगेगा. देखो, this is also a triangle. This, if you see this thing here, here, this ऊपर the height का length is 8. This is 8 centimeter और ये नीचे का 15 है and this is again x. यही हम लोग को ढूंढना है. At 90 degrees यहाँ पे देखो, this is 90 degrees ना, every angle here is 90 90 90 90. Okay, so अभी हम लोग को x ढूंढना है, which is the side. So now again using Pythagoras theorem, what does it say? The square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the remaining two sides. यहाँ पे the hypotenuse is x centimeter. ये जो slant वाला है, that is the hypotenuse. It's opposite to the right angle. तो देखो x का square is equal to 8 का square plus 15 का square. So now x square is equal to 8 square is 64 plus 15 square is 225. ये मेरे को अभी याद हो गया because of practice है ना, तो तुम लोग को भी ऐसे बहुत बार करोगे याद हो जाएगा. So now x square is 289. Okay, if we add Yes. this, so x is equal to square root of 289. और ये तुम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा ढूंढने में. So I'm just doing it now for now. So अगर if you check also, so x is equal to 17 centimeter. Even calculator में डालोगे या खुद करोगे 17 into 17, answer will 100% come out to be 289. Okay, so like ये मैं sure हूँ. So you can check on it. So that means x is 17 centimeter. That is the side का length. Is 17 centimeter. This is 17. This is also 17 and so is the fourth side. So now if you have to find perimeter, perimeter is nothing but perimeter is equal to 17 plus 17 plus 17 plus 17. और इसको same thing is nothing but 17 into 4. एक ही बात है ना, दोनों करेंगे. So this comes Yes, out sir. to be, so now this comes out to be 68 centimeters. Finally, the perimeter of the rhombus. Okay, therefore perimeter is 68 centimeter. Okay, ये लिख लो पूरा. और ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम लोग को ड्रॉ करना है अपने बुक में. एंड ये 90 डिग्रीज है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत Yes. ही. बिकॉज ऑफ दिस 90 डिग्रीज ओनली वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. 90 डिग्रीज. ओके, आई एम वेटिंग ओके फॉर 2 minutes. ये अच्छे से लिख लो पूरा, पूरा अच्छे से. हाँ, Sir, can you scroll down? या यहाँ ठीक है. More एवरीवन down. कॉपी दिस. ओके, हाँ बस यहाँ तक ही है. Yes. सो एंड में लिख सकते हो therefore perimeter of rhombus is 68 centimeters. ये आंसर है. ये क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, ये rhombus के जो हम लोग ने पेरीमीटर वाले यूज किए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो दिस इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, Yes, sir. ओके चलो ठीक है, यू आर डन. बट थोड़े सब लोग के लिए we'll wait for 2 more minutes last and then start with something new now. Okay.
Okay, so yeah, with this we basically concluded everything about rhombus and parallelogram, and इस पे काफी like these are really nice good level questions. So I hope everyone's understood this, and yeah.